Hello everyone. So this was my first time that I'm doing a story time video kind of thing. So yeah, please माफ कर देना अगर कुछ ज़्यादा मज़ा ना आए तो. And please don't mind the background noises. Please. This is the day, I guess 27th of Feb, when I injured my ankle. And what happened was कि उस दिन yeah, we had a Women's Day program on 8th of March. So उसके लिए auditions थे for the next few days, like in dance, anchoring, singing, and many categories. I decided to take up anchoring because dance के लिए मुझे पता था कि मुझे काफ़ी time देना पड़ेगा, but I really wanted to do something. It was the first program and I wanted to do something really badly. Plus because of this NEET and everything, मैंने अपना एक्स्ट्रा सर्कुलर एकदम ड्रॉप कर दिया था फॉर फ्यू इयर्स एंड नाउ आई वांटेड टू टेक इट बैक एंड आई वांटेड टू डू इट अलॉन्ग विद स्टडीज़. या मैंने सोचा था कि मैं एंकरिंग लूँगी, बट जो बच्चे डांस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे आई वॉज जस्ट सीइंग देम एंड देखते देखते लगने लगा यार मुझे भी डांस करना है. बट मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि डांस करना आता नहीं है और समथिंग लाइक दैट. मैं करती थी, मैंने क्लासेस भी ली हैं डांस की थोड़ी बहुत, लाइक इन क्लास 7th 8th 9th, बट उसके बाद से सब छूट गया था. एंड देन आई थॉट ओके व्हाई नॉट, मैं भी करके देखती हूँ. सो सब फ्लोर पे, हम लोग के फ्लोर की लड़कियाँ सब लोग डांस कर रहे थे, अपना करके दिखा रहे थे. एंड आई वॉज गोइंग टू डांस ऑन दैट सॉन्ग. मतलब ऑडिशन मैंने सोचा था उस गाने पे दूंगी, नगाड़ा संगीत, या दैट दीपिका पादुकोण वन सॉन्ग. सो अब उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइक टर्न्स एंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, बहुत ज़्यादा. सो क्या हुआ कि ऐसे नहीं, मैंने 3-4 बार पहले भी किया था और इसका दोपहर में. एंड जब मैं दिखा रही थी शाम में सबको, तो एक बार मैंने टर्न मारी, मेरा चश्मा लिटरली दूर जाके गिरा. दूसरी बार मैंने टर्न मारी तो आई गेस मेरा पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ था, मैं गिरी नहीं थी. एंड देन थर्ड टाइम आई डिसाइडेड नाउ आई डू इट वेरी नाइसली. बट जैसे ही मैं एक स्टेप में ऊपर कूदी एंड व्हेन आई लैंडेड माय लेग टर्न लाइक दिस इज माय लेग एंड इट टर्न लाइक दिस. एंड एट दैट टाइम आई वाज लैंडिंग ऑन ग्राउंड एंड वो इतना फोर्स लगा कि मैं अचानक से गिर गई. मतलब वो बहुत तेज़ पेन किया, बट तब उस समय फॉर लाइक 30 सेकेंड्स इट पेन. उसके बाद मैं खड़ी हो गई एंड आई परफॉर्म्ड वन मोर टाइम एंड मैंने पूरा गाना परफॉर्म कर लिया था, तब कोई दिक्कत नहीं हुई. एंड I was feeling really bad when all the girls were laughing at me actually, because मैंने बहुत दिन से डांस किया नहीं था and I really wanted to prove myself kind of something. I guess I failed really badly. After like 2 hours, it started paining so much, like I couldn't put my foot on the ground and मेरा हालत बहुत ख़राब होता. मैं अपने पैर को like अगर ये मेरा पैर है तो मैं इसको ऐसे भी नहीं कर पा रही थी, ना ऐसे कर पा रही थी, और ऐसे रखे भी वो बहुत तेज़ दर्द कर रहा था. सो दर्द बढ़ता जा रहा था एंड आई वॉजंट डूइंग समथिंग. आई थॉट कि नॉर्मल सा स्प्रेन होगा और इसमें मूव वूव लगा के ठीक हो जाएगा. एट अराउंड 11 o'clock आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड मैं उसको बता रही थी कि मेरा पैर थोड़ा सा वो हो गया है. एंड आई सेड कि थोड़ा सा उस जगह पे हल्का सा लाइक कॉनिकल प्रोजेक्शन टाइप का दिख रहा है. ओके, इट वॉज नॉट फ्रैक्चर. अगर फ्रैक्चर होता तो बहुत तेज़ पेन करता, बट इट वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल स्प्रेन. वो बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था. सो इसके बाद हुआ कि नहीं यार डॉक्टर को दिखा लेते हैं. एंड अराउंड 12 o'clock आई कॉल्ड माई हॉस्टल प्रोवोस्ट, दैट इज अ एनाटॉमी प्रोफेसर, and I told her the scene and she said you should have told earlier because obviously precautions are better than cure, but अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो you should act fast because you will never know कि क्या टाइम पे हो सकता था. So yeah, she arranged for an ambulance at around 12:30 and then the main thing started. Oh god, an ambulance is waiting for you outside and you're with 2 of your friends like this and you're just like jumping and going. मतलब बहुत ही अजीब सा सीन था. आई वॉज लाइक कि हाउ कम इतनी जल्दी ये सब देखना पड़ रहा है. एंड आई नेवर सैट इन एन एम्बुलेंस. मतलब मैं कभी बचपन में भी नहीं बैठी हूँ, किसी की तबीयत ख़राब हुई है तो मतलब कभी ऐसा मौका नहीं आया मेरे पास. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम
ऐसा हुआ था एंड आई couldn't literally move my leg and इतना पेन कर रहा था and at that time only the trauma centers were open, so because obviously रात 24/7 trauma centers ही open रहते हैं. So I went there and I couldn't just tell you how much it was paining. Like इतना ज़्यादा pain normal sprain में नहीं होता है. That was for sure. And I was sitting there and वो trauma center का feel बहुत ही ज़्यादा गंदा था. मतलब it was that moment that I was thinking कि क्या मैंने सही किया मेडिकल लेके, बिकॉज पढ़ाई एक साइड है बट ऑल्सो सीइंग दोज पेशेंट्स एंड दोज इंजरीज एंड एवरीथिंग, द ब्लड, द बैंडेड्स all over there and things like that. मतलब वो दर्द भी कर रहा था पैर एंड ऊपर से मेरा वहाँ पे चीज़ें देख के बहुत इमोशनली वो हो रहा था. डिड आई डू राइट टेकिंग दिस स्ट्रीम और नॉट, बट पेन के कारण अभी उतना भी नहीं सोच पा रहे थे. बट यस, एंड थिंग्स वर टेकिंग टाइम बिकॉज थोड़े पेपर्स बनने में टाइम लगते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इट वॉज टेकिंग टाइम एंड डॉक्टर सजेस्टेड एन एक्सरे. सो एक्सरे में भी टाइम है बिकॉज काफ़ी लाइन लगी हुई थी एक्सरे के लिए. एंड मतलब मेरा पैर इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड आई लिटरली फेंटेड. मैं बैठे बैठे बेहोश हो गई. आई डोंट नो, मतलब मैं बेहोश हुई, मुझे पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा और बहुत 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 बेकार हालत हो गया था मेरा. मतलब आई वॉज जस्ट लिटरली थिंकिंग काश मम्मी पापा मिलते, बिकॉज ऐसे भी मैं कभी घर से बाहर नहीं रही हूँ. एंड फर्स्ट टाइम जब रहना स्टार्ट किया इन जस्ट 14 days दिस हैपन एंड आई वॉज रियली मिसिंग माई मॉम एंड डैड. So I couldn't talk to them at that moment also, and then it was time ki x-ray lena hai. So I asked for a wheelchair, but at that time that wheelchair was not available. So the doctor said ki stretcher pe jao, and I was like kyun stretcher pe kyun? So yeah, from 28th Feb to 3rd March I couldn't move my leg. I couldn't put it on the ground and pain कम हो चुका था, but I couldn't walk on my own. And then I thought कि एक और बार जाके दिखाना सही रहेगा, and this time not trauma center, OPD, because that would do a detailed checkup. So I went there and the doctor said it's an ATFL tear, it's anterior talofibular ligament. Yes, I'm studying MBBS. You know, when I saw the prescription and it was written ATFL tear, I was like, okay, पढ़ाया गया है हम लोग को like that. So yeah, तो हम लोग like he suggested for a fiber cast, which you would have seen on my community post. I put a pic of my leg there. So yeah, उन्होंने कहा कि इसमें तुम चल पाओगी, and yes, I was able to walk then. But वो fiber cast भी काफ़ी heavy था, though it was not as heavy as a plaster, but it was still heavy and still uncomfortable. So on 4th of March I decided that yes, I'll go to college today. काफ़ी मैंने हिम्मत बांधी because hostel में from 8 to 5 when no one is there and you could just hear the silence and आप अकेले हो, it's the first time you have injured yourself badly and there's no one to take care of you. Just leave care, मतलब आप सामने भी किसी को नहीं देख रहे हो अपने, it just feels too lonely and that was kind of mentally harassing me at that moment too. But okay, on 4th of March I thought कि चलो अब मैं कॉलेज जा पाऊँगी. But what happened कि मैं कॉलेज गई and for 2 hours my leg was like this, मतलब my toes swelled up and it was as if my leg will explode in the fiber cast. So that happens because fiber cast आपका काफ़ी टाइट बाउंड किया जाता है पूरा लेग के अराउंड, एंड जब आपका पैर नीचे ग्रेविटी के कारण तो फिर वो ब्लड एंड ऑल एवरीथिंग स्वेल कर जाता है. सो बिकॉज इट्स कंस्ट्रिक्टेड, यू हैव कंस्ट्रिक्टेड योर लेग. एंड देन आई वेंट बैक टू हॉस्टल एंड it was 4th and then I told my professor कि ऐसा है मैम, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ. then she said then try after 2 days, maybe ना हो ऐसा. But now things were like it was getting bad.
मतलब मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी, एंड यू नो स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज, मतलब when you are feeling bad because you are away from home, and at that time when you have to stay in hostel with nobody else, मतलब कोई भी नहीं हो आपके सामने, it feels too lonely, मतलब it feels too lonely to handle. That was when I decided that I'll go home. Now the problem was that my mom and dad lives in Gujarat. Though I am from Kanpur, Uttar Pradesh, but they live in Gujarat, and मेरी दादी बाबा रहते हैं कानपुर में. So I decided कि कानपुर जाऊँगी, because अगर मैं यहाँ पे भी आना प्रेफर करती गुजरात, तो it would take 5 hours at least. मतलब जैसे फ्लाइट से आना, तो फिर उसमें भी पैर मेरा नीचे रहता है, and it would have swelled up. So yes, मेरी बुआ आई and by car हम लोग गए कानपुर. So when I reached home, I felt really good. मतलब वो lonely feeling वापस चली गई थी, and it was good. I felt कि like मेरा mental peace यहाँ पे भी सही रहेगा, and I could study. Like I tried studying in hostel, but वो अकेलेपन में मुझसे नहीं हो रहा था. But when I came home, it was really good. मतलब दादी बाबा तो और फिक्र करते हैं एकदम, मतलब होता है ना एकदम प्यार से रखते हैं बिल्कुल. So yeah, and then I studied there, and I stayed in Kanpur from like 7th of March till 20 March. So yeah, it was a long time, and college में काफ़ी gap हुआ, but it was inevitable. So I stayed there, and धीरे धीरे improve कर रहा था मेरा पैर. But you know, मतलब कि I was constantly thinking कि अगर college में होती तो भी क्या हो रहा था. Maybe I was missing on many things, interaction and everything else. So when I went back to college, and as I entered the classroom, I felt lost, because काफ़ी दिन हो चुके थे, 1 महीना हो चुका था, and काफ़ी interaction हो चुका था लोगों के बीच में, and I felt kind of left out. So, and more than that, the studies, because dissection hall हम लोग start हो गए थे from 28th Feb, and when you miss your classes of dissection hall, it's really hard to cope up, because आप पढ़ते हो anatomy, it's alright, but when you see it on the body, that's the moment when you remember it for lifetime. So yeah, and then the main struggle started. I had to cope up with the whole lower extremity, that is leg, lower limb, and I had to just complete in 15 days, because on 7th of April we had our part completion viva. That is when one part is completed, you have to do that. And maybe that was the reason I couldn't upload many videos at that time period, because basically I didn't had any content because my leg was injured. And after that I was vlogging something, but बहुत टाइम लगा मेरे को उसको डालने में यूट्यूब पे, because it was disastrous period. Like you have come back to college after one month, 15 days लगभग, and you are feeling left out, and on top of it you have to cover the studies too. And let me tell you, KGMC में बहुत टेस्ट होते हैं, बहुत वाइवा एंड बहुत टेस्ट होते हैं. Even there's a lab leaving test, because we rotate our labs from 1 month. In 1 month. Like last time I was posted in biochemistry lab, and at that time I couldn't give my LLT, that is lab leaving test, because I was at home, and this time I was posted in human lab. So yeah, and our LLT was right now only, like it was on 12th April. Yeah, it went good. Yeah, human lab is where you are you know, मतलब आपको सिखाया जाता है कैसे आप BP लोगे and pulse नापना and everything like that, like a real feel of doctor. So yeah, so struggling with the syllabus, like I tried to complete everything, and e-Gurukul lectures helped a lot, honestly, because classes बहुत छूट चुकी थी. And just one day I went to DH and asked my teacher, can you please help me? This was the case, and I would really want if you can help me and just teach me from like start a little bit things, because I have studied by myself, so चीज़ें समझ आ जाएंगी, बट आप एक बार बॉडी पे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो. एंड द टीचर्स आर रियली गुड, मतलब वो समझते हैं आपको एंड वो बता देंगे आपको. सो या, दैट वाज द प्लस पॉइंट. एंड समहाउ या, सो दैट वाज द थिंग हाउ आई मैनेज्ड दिस होल 1 month ऑफ माई कॉलेज, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 28th Feb till 7th April, I guess. Yes.
So yeah, that was the story time, and I don't know, I think it was really boring, but I tried to do something new. I hope you guys would like it. Do tell me in the comment box if you like this video. And yes, I would see you in the next video. Till then, stay safe and bye.